Title of our course is Postcolonial Literature. All of you are student of English literature and you have studied the core courses of English literatures like poetry, fiction, drama, literary prose, and theory. And you have read several extended courses like American literature or literature around the world or South Asian literature or fantasy and so on. All of us know literature represents life. Literature moves the heart of the reader. It moves the audience. Through literature, the poets and fiction writers express their emotions, feelings, and try to civilize those emotions. It teaches from morality to political consciousness, and usually we study literature at least with 4 perspectives, which are called mimetic theory, mean literature represents life or cosmos or nature or truth. Expressive theory, which has emphasis that author has something to share with the readers, and the poets, especially the romantic poets, they express their subjective visions through this type of literature, and here we try to access the meaning, approaching the true intention of the author. Third one is what changes are seen in the behavior or personality traits of the readers, means our focus is didactic literature. And in contemporary world, literature has emerged as a discipline of studies across the world, and there is theory to understand, to create, and to interpret literature. And here most significant in the first half of 20th century was formalism, which lays emphasis on literariness of literature, and that literariness is attained through defamiliarization, यानी कि पहली से सुनी सुनाई जानी हुई बातों को नए रंग से करने को, नए अंदाज में कहने को लिटरेचर कहते हैं, लिटरेरीनेस कहते हैं, और इस टेक्निक को हम defamiliarization कहते हैं. And that definition reduces literature to a definition where literature is thought a verbal construction of reality. In that age, literature, which often provokes universal ideas, universal themes, it has received a lot of response or feedback or counter narrative.
नैरेटिव का लफ्ज हम आजकल काफी मीडिया पे सुनते रहते हैं, और उर्दू में भी गांधी साहब ने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया था बयानिया से, और फिर ये पॉपुलर हो गया बहुत। अब तो हर एंकर ही ये लफ्ज यूज करता फिरता है। नैरेटिव मीन अ perspective that can be logically explained. So there are narratives in contemporary literature which challenges the mainstream English narrative. And one of those narratives is post-colonial. Other narratives are gays and lesbian narratives, eco-critical narrative, anti-war literature, Marxist literature, and so on. यानी कि इसके अलावा भी काउंटर नैरेटिव्स हैं, बट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट काउंटर नैरेटिव इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? इट हैज रूट्स इन हिस्ट्री, एंड दिस हिस्ट्री वी इंडियन आर क्वाइट familiar with. That's a history of colonial era. सबको मालूम है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट was colonized by the British Empire. In 16th century हम कह सकते हैं कि that was the time when a new trend of conquering the world began. Before this, there was a tradition that is often introduced as a tradition of conquest. फुतूहात की तारीख, यानी कि जब तलवार जो है वो फैसला कुन थी और सिपह सलार अपने लश्करों के हमरा कमजोरों या कमजोर समझे जाने वालों पर चढ़ दौड़ते थे और उनके इलाके फतह करते थे। Whole history is that story of, you can say, victory and defeat, conqueror and the conquered, and conqueror becomes the master of the land that he conquers. वरना इंडियन का क्या लेना देना मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर द ग्रेट से? और हम तो अपने बच्चों के नाम भी सिकंदर रखते हैं, बल्कि उसके नाम के साथ जैसे रवायत रही कि ग्रेट का तर्जमा आजम, सिकंदर आजम रख, यानी कि जिस शख्स ने इंडिया को आके तहस नहस किया और यहाँ हमला आवर हुआ, दैट वाज अ कंकरर, ही इज रिमेंबर्ड एज अलेक्जेंडर द ग्रेट. एंड this story continues not only in India but in other parts of the world as well. The empires had a history, and empires were introduced with the hallmark trait that empires expand. If they fail to expand, they cease to exist. यानी कि पर्शियन एम्पायर, असीरियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, they were bound to expand themselves, and above all there was Roman Empire. तो ये एम्पायर की एक तारीख है। उसके बाद फिर इस्लामिक कंक्वेस्ट हैं, उनकी एक तारीख है, और उसमें आप देखते हैं हाउ द इन्वेडर्स
conquered different parts of the world. यहाँ जो कंकिस्ट की हिस्ट्री है उसको आप एक पॉइंट से बिल्कुल समझ सकते हैं कि चूंकि तलवार फैसला कुन थी, इसलिए जीतने वाला हारने वालों को गुलाम बना लेता था, या वो खुद उसकी ताबेदारी और अतात कबूल कर लेते थे, या अपनी जान से जाते थे। Ultimately, that created interracial marriages and several trends in history. लेकिन यहां पर दुश्मनों को से निमटने का जो सबसे बड़ा जरिया था वो यही था कि ताकत के जोर पर, तलवार के जोर पर अपनी बात मनवाई जाए और उनको कंकर किया जाए और उनके वसाइल पर, उनकी जमीनों पर, उनकी हुकूमतों पर कब्जा कर लिया जाए। That was largely agrarian societies. That was a time where feudal aristocracy was significant and industry had no privilege. In second millennium, when there was focus on expansion, nationalism, and industry, a new mode was introduced. And that was introduced by the significant empire of 16th century, I mean Spanish Empire. Later on, the tradition was continued by other empires, I mean French Empire and British Empire. If you have read Edward Said's Culture and Imperialism, Edward Said has focused on these three empires which played crucial role in colonial era. Spanish Empire, French Empire, and British Empire. इसका ये मतलब नहीं है कि colonizer इनके अलावा नहीं थे. In Asia, there was a colonizer, Japan, that colonized China and Korea. And there were many others in other parts of the world, but these were the major empires. And probably in 19th and then early 20th century, Hello, sir. there was British Empire, and British Empire has no match. That ये वही एम्पायर है जिसका तस्करा हम इस तरह से करते हैं कि बरतानवी राज या अंग्रेज सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। अब ये अस्सलाम वालेकुम एम्पायर सर। जी सॉरी टू से सर, ड्यू टू नेटवर्क इशू आपका जो आपने जब स्टार्ट किया है ना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, तो सर most of students are totally about you to understand this literature because Pakistan literature or post-colonial literature, it's not a cup of tea. I think it's a Herculean task for us. So, sir, मतलब जिस तरह ये आप ब्रिटिश एम्पायर या मतलब दूसरे एम्पायर बता रहे हैं, तो सर इसमें ना पूरी तरह एक तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जस्ट अनइटली आप चूज की वजह से, तो सर हाउ वी कैन मैनेज प्लीज, ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते स्टूडेंट्स के, हाउ वी कैन मैनेज प्लीज। पहली बात तो ये है कि अभी मैंने बात सिर्फ शुरू की है और अभी पहली स्लाइड को भी मैंने नहीं शुरू किया। दूसरी बात ये है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपको शेयर किया जाएगा।
ताकि जो भी आपके नेटवर्क इश्यूज हैं आप इसको दोबारा सुन सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी बात तो शुरू ही हुई है, तो आप कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? मैंने पहला कॉन्सेप्ट कंकेस्ट का बताया सिर्फ। ओके सर, ओके ओके। जी, in conquest, sword was important. It decided the future of the conquered. यानी हारने वालों का मुस्तकबिल तलवार ही तय करती थी कि अब इनके साथ क्या सलूक है। बट इन सेकेंड मिलेनियम, स्पेशली after Renaissance age or during the Renaissance age, a new trend began, because that was beginning of age of knowledge as well. That was beginning of secular age. And before that, there was medieval time, and medieval time was a religious time. So here, European empires, they developed a notion that they are more advanced and civilized, and they have a right to civilize others. यूरोप की अक़वाम, खास तौर पर आज के ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस ने दुनिया को ये कहना शुरू किया कि हम जो है वो ज्यादा तहजीब वाले हैं और बाकी नहीं है, या कम तहजीब हैं। उन्होंने अपने लिए सिविलाइज और दूसरों के लिए सेवेज के टर्म्स कॉइन कर लिए, एंड सेवेज वाज टू बी सिविलाइज्ड। और उन्होंने कहा कि ये अब हमारा एक मिशन है, हमारा मकसद है कि इन सेवेज को सिविलाइज किया जाए। ये एक अल्टीरियर मोटिव था, ये एक ज़ाहरी मकसद था कोलोनाइज लैंड पर कब्जा करने का। उन लैंड्स जैसे इंडिया, अफ्रीका, कैरेबियन वगैरह के रिसोर्सेज को अपने डायरेक्ट इस्तेमाल में लाने का। चूंकि साइंस की इब्तदा हुई, मशीनें ईजाद हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज का आगाज हुआ। अब इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सब तो यूरोप में मौजूद नहीं है, तो जहां जहां उसे वो मौजूद है वहां वहां से उसे लाना चाहिए, चाहे वो गोल्ड फ्रॉम गोल्ड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका है, या कोल फ्रॉम इंडिया है, और आइवरी फ्रॉम कॉन्गो है, वट एवर द थिंग्स आर। तो इन मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल करना, ये कॉलोनियलिज्म का एक हिडन मोटिव था, हिडन एजेंडा था। कॉलोनी का वर्ड हम सब जानते हैं, तो चूंकि ये ज्यादातर जो अंपायर्स थी, या उस वक्त शुरू में तो नेशन स्टेट्स थी, फिर अल्टीमेटली अंपायर बनी, तो ये स्टेट्स जो थी इन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज कायम की। जैसे ब्रिटिश अंपायर जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600, एक्चुअली प्रपोजल वाज इन presented in 1599, and they conquered, they reached the target lands like India, Africa, Caribbean, etc. And gradually these companies became more powerful than the existing monarchies or kingdoms or rulers. जैसे इंडिया में 1600 में काम का आगाज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी वक्त के साथ साथ इतनी ताकतवर हो गई कि मुगल बादशाह उसके सामने बेबस हो गए। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, एंड बहादुर शाह जफर वाज
even less powerful than a clerk of East India Company. And that power ultimately was transformed into direct rule of that empire. यानी 1600 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस से पहले यहाँ फ्रेंच, डच और पोर्चुगेज ट्रेडर्स और उनकी कॉलोनीज भी कायम हो चुकी थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इवन मुगल अंपायर शुरू होने से पहले, यानी मुगल जो फर्स्ट रूलर है, दैट इज बाबर, who ruled, who succeeded to establish his rule in 1526. But in 1521, Goa was surrendered to Portuguese. गोवा का इलाका जो है 1521 में ही ये पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था, और हम पढ़ते हैं कि ये ना सिर्फ 1947 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, बल्कि उसके बाद भी अर्ली 60s तक ये पुर्तगालियों के पास ही रहा। फिर इंडिया ने इसको वापस हासिल किया आज के इंडिया में। तो कभी भी मुगलों की गोवा पर हुकूमत कायम नहीं हो सकी। तो ये कंपनीज फ्रेंच भी थी, डच भी थी और पोर्चुगेज भी थी, और भी कंपनीज थी जो कि काम करती थी। अगर आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल पढ़ा है तो आपको बेल्जियम की कंपनी के बारे में पता चलेगा जो कांगो में काम कर रही थी। तो ये कंपनीज जो है अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इनकी एक कॉन्फ्रंटेशन होती है, जैसे इंडिया की हिस्ट्री में देखते हैं कि मैसूर की जो है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान की लड़ाइयाँ होती हैं। मैसूर जो है वो अंग्रेज के सामने सरेंडर हो जाता है अल्टीमेटली। उसके बाद जंग प्लासी होती है, फिर और ये सिलसिला चलते चलते 1849 में पंजाब की रंजीत सिंह की हुकूमत जो है वो हार जाती है अंग्रेजों से, और 1857 में अल्टीमेटली एक म्यूटनी जिसे कहा गया या वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया वो होती है, और इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद डायरेक्ट इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन का पार्ट बन जाता है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1947। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं कि आपके ज़हन में तीन बातें रहें। पहला, कॉलोनी वाज जस्ट अ सरफेस of colonial rule. Colonialism was a philosophy, was an imperialist approach to influence the culture, the living style, the politics, and the society of the colonized nation. And it created two entities, colonizer, दूसरे लफ्जों में इस्तेमार, एंड कोलोनाइज्ड, यानी कि इस्तेमार का मारा हुआ नौबादियाती निज़ाम का शिकार होने वाला मुआशरा, फर्द, गिरोह और हुकूमत। ये लोग जो कि कोलोनाइज्ड हुए, यहां बहुत सी चेंजेस आई। These changes were seen in their architecture. इंडिया में गंधारा आर्ट की जगह गोथिक आर्किटेक्चर ने ले ली। म्यूजिक, जो इंडियन कन्वेंशनल म्यूजिक था उसकी बजाय ब्रिटिश म्यूजिक के कौन कौन से शेप हैं वो आप खुद देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ राइटिंग, दास्तान की जगह नावल और शॉर्ट स्टोरी। मसनवी की बजाय जदीद नज़म। इसी तरह पेंटिंग में और हमारी ड्रेसिंग और हमारे फूड और टेबल मैनर से लेकर हर चीज पर
कॉलोनियल इंपैक्ट आए। हाथ से खाना खाने वाले हिंदुस्तानी अब स्पून और फॉर्क के जरिए खाते। हम सब स्पेशली इन अर्बन सोसाइटीज वो अटैच बात जो हमारे घरों का हिस्सा है, आप उसकी जरा सी तारीख जाने तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तानी मुआशरे के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसी चीज को एक्सेप्ट करना जिसे वो घर के अंदर लाना जो है वो घर को प्लीत करने के बराबर समझते। बट दैट हैपेंड। colonial masters influenced the colonized nations. Purpose was to show that they are more civilized, they are more advanced, they are more progressive, and colonized must follow their path. तो colonize के बारे में उन्होंने कहा कि इनको ना हुकूमत करना आती है, ना रहना आता है, ना मजहब इनको पढ़ना आता है। सो उन्होंने हर चीज के बारे में कुछ कवायद ज़वाबित बनाए। यहां भी मैं थोड़ी सी दोबारा से हिस्ट्री का हल्का सा हवाला दूंगा। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको कि इंडिया की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आखिर उसे कायम कौन करता है? ए ह्यूम, एन इंग्लिशमैन, एंड फर्स्ट 3 presidents were English. And what was their manifesto? वो मंशूर क्या था जिसके तहत वो जमात कायम की गई थी? वहां हम देखते हैं कि दे वांटेड टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर मास्टर्स। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक और सियासी जमात कायम की गई। पर्पस वाज टू create cordial relation of the English rulers and the Indian Muslims। यानी अंग्रेज सरकार की तरफदारी, हमायत और खिदमत के लिए एक जमात कायम की जाए। उसी पैटर्न पर जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट्स होती हैं, उस पैटर्न को इंडिया में लाया जाता है। 1865 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन that is gradually brought to India in a final shape of India Act of 1935। हमारे जमाने के बहुत बड़े हिस्टोरियन, इंडिया से उनका ताल्लुक है, आशीष नंदी। He has written, he is actually a master of a genre that is called psychological history, and he has written a lot on the relationship of empire and the people and indigenous leaders of India। उसकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाता, सिर्फ ये कहना था कि पॉलिटिक्स में इस तरह से हुआ। एंड there were influences on literature, there were influences on architecture, music, painting, and even the lifestyle of common people, not only from urban elite to rural downtrodden। उनके जूतों और कपड़ों से तक कॉलोनियलिज्म के असरात पहुंचे। एंड that which was done in the name of civilizing the uncivilized। अब इसी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ बातें हुई, लोग खड़े हुए, तहरीकें चली। खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट started a movement against British rule, but that was non-violent political movement। Ultimately
India was partitioned in Pakistan and India at that time, 1947, and there was a transfer of power. The colonial rule apparently ended, but it continued in different disguises, because native had mixed feeling for that rule. These mixed feelings are called ambivalence. Ambivalence mean mixed feeling, love and hate. चूंकि जो भी लैंड कोलोनाइज्ड हुए, वहां के रहने वाले अपने कॉलोनियल मास्टर से इस किस्म की ताल्लुक रखते थे, बुरा भी जानते थे, उसको समझते थे उसने हमें महकूम और गुलाम बना रखा है, हमने उससे आजादी लेनी, लेकिन उसी की लैंग्वेज को ऑप्ट करते थे, उसी के कल्चर को ऑप्ट करते थे, उसी की ट्रेडिशंस को ऑप्ट करते थे। उनके दिल में कहीं ना कहीं अंग्रेज बनने की तमन्ना रहती, और यही वजह है कि हमारे आज भी किसी की तारीफ करनी हो, तू बड़ा अंग्रेज लग रहे हैं, माया अपने बच्चों को कहा मेरा पुत्र अंग्रेज लग रहा है, और कोई माँ नहीं कहती कि मेरा बेटा सिख लग रहा है, या कोई माँ कहती है कि मेरा बेटा बलोच लग रहा है। जो यहाँ के मतलब लोग हैं वो भी हसीन और जमील हैं, वो भी समझदार हैं, अकल और फहम रखते हैं, लेकिन माएँ अपने बच्चों को नहीं कहती कि हमारा क्या बात है, क्या कैसा शानदार पश्तून है, या राजस्थानी है, या और भी हिंदुस्तान के जो इलाके हैं, या हमारा बांग्लादेश है तो बंगाली है। सारी माएँ अक्रॉस इंडिया अपने बच्चों की तारीफें ऐसे कर रही हैं कि ये अंग्रेज लग गए। हमारे जो रिलेशन है अंग्रेज के साथ, उसके सिस्टम के साथ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसकी वैल्यूज के साथ, उसके इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, उसके सोशल सेटअप के साथ, उसके आर्ट्स एंड लिटरेचर के साथ, दैट आर अम्बिवलेंट, यानी वी हेट देम, वी लव देम। सो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, दैट ट्रेंड इज पोस्ट कॉलोनियल, और दो तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, पोस्ट के बाद हाइफन आएगा और उसके बाद कॉलोनियल है, और पोस्ट हाइफन के बगैर कॉलोनियल है। पोस्ट विद हाइफन कॉलोनियल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल chronological time period when colonial rule ended, यानी it means वो टाइम जब किसी इलाके में कॉलोनियल एज, कॉलोनियल जमाना खत्म हुआ। दूसरी बात, पोस्ट कॉलोनियल स्टैंड फॉर अ थॉट, अ कॉन्सेप्ट, अ theory which believes that colonized were misrepresented by colonial. I repeat, post-colonial means the colonized were misrepresented by the colonial masters. वो समझते हैं कि हमारे colonial masters ने हमें सही तौर पर पेश नहीं किया, हमारी दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं की, हमें सेवेज कहा है, हमें अनसिविलाइज कहा है, हमें टेरानेलिया कह दिया है, इस तरह के और बहुत सारे अलकाब दिए हैं, जिससे हमारी जो हिस्ट्री थी उससे हम कट गए, हमारी कल्चर से कट गए, अपनी ट्रेडिशन से कट गए, वगैरह वगैरह। और वो चाहते हैं कि अब उनकी बात सुनी जाए, और वो अपनी बात पैराडॉक्सिकली उसी लैंग्वेज में सुनाना चाहते हैं जो उनके मास्टर्स की ज़बान है। तो हम वो तीन जो मैंने अंपायर बताई थी, स्पेनिश और फ्रेंच,
को छोड़कर सिर्फ ब्रिटिश अंपायर पर फोकस करेंगे और ब्रिटिश अंपायर को जो काउंटर बैक एक लिटरेचर मिला है, दैट वी से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. That literature basically belongs to fourth regions: South Asia, Africa, Caribbean region, West Indies, Jamaica, etc., and Australian and Canadian aborigines. We can say also Native American. So these four are the major regions where the British Empire actually ruled, and these people learned English language and they expressed themselves through English literature. यानी ऐसे राइटर्स इंडिया में, अफ्रीका में, कैरेबियन में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, अमेरिका में मौजूद हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं. यहां एक छोटी सी वजाहत के अगरचे ये इन्हीं चार को हम ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर के, लेकिन अमेरिका का कॉलोनियलिज्म के साथ एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, क्योंकि अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो उसकी एक हिस्ट्री कॉलोनाइज्ड होने की है